Hello everyone. In our last class, we had discussed about 11 principles. We had completed around 11 principles of field of regarding management. What are they? They are discussed about all kind of division of work, authorities and responsibilities, discipline, unity of command, unity of direction, subordination of general interest, individual interest to general interest. Thereafter, remuneration to employees. Yes, next centralization and decentralization. Next it was scalar chain. Next it was all about order, and then we discussed about equity. Now what we need to discuss from in this video, we need to learn about what are the remaining principles. Remaining 3 principles are left. There are 14 principles of fuel on the basis of principles of management. So let's discuss, begin with the very first principle for today's class, that is stability of personnel. What do you mean by personal? It's not like that personal, it's a personnel. You are dealing with a personal employee, not you are dealing with a personal only an individual employee. Now you are dealing with all kind of employees in your organization. You are dealing with a group of employees, multiple team members. You are dealing with the each and every person in your organization. Personal is don't deal with the single person, it deals with the all persons of an organization. What does that mean, stability of personnel? Here what you think, like that if you are hiring an employee, recruiting them, you are then providing them training, then you are providing them job, then you are providing, asking them to do job for particular time period, for example 1 year, 2 year or 3 year. The concept of bond system is established due to the stability of personnel. What is it's all about, that whenever you hire an employee, you give them training, you give them development, you occur a training and development cost, research cost, so that your employee will give you a better efficiency. He will learn and give you a better efficiency. But what if he is not able to complete his work for given time, or he is not survive for the long time, then your cost occurred for training purpose will not be worth for your organization. It will be a totally loss for the organization. लाइक आपने किसी एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी, ट्रेनिंग प्रोवाइड करके वो सीखा, आया 5 to 6 months काम किया और उसने कंपनी शिफ्ट करी, ऐसे जॉब शिफ्ट किया. और राइट नाउ इन टुडे सिनेरियो बहुत सारे लोग कंपनी शिफ्ट कर रहे हैं, बहुत सारा लेबर टर्नओवर हो रहा है जस्ट बिकॉज दे वांट टू गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटीज. और अगर इनकेस आपने सारा काम उनको सिखा दिया और आपने उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं दी, तो माय डियर फ्रेंड्स दे वोंट बी स्टेक इन योर ऑर्गेनाइजेशन. So according to FAOL, you need to maintain your employees, you need to stop your labor turnover, as well as you need to maintain your employees so that they will be help you and they can stay in your organization for a longer period. Clear? Let's understand this. Employee turnover should be minimized to maintain organizational efficiency. आपका जो भी एम्प्लॉय टर्नओवर है उसको आपको मिनिमाइज करना है, so that you can maintain organizational efficiency. After being selected and appointed, after due and rigorous procedure, the selected person should be kept at the post for a minimum period decided to show the result. कंपनीज बॉन्ड इसीलिए फाइल करती है so that आप कम से कम इतने टाइम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में टिके रहें और आप इतना काम तो कम से कम करें. हमने आपके ऊपर खर्चा किया भाई, हमने आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, आपको इतना काम तो यहाँ पर करना पड़ेगा. दिस इज ऑल अबाउट द कंपनीज पॉलिसीज. Why we are spending on you, why we are giving training to you, it all depends on the company's stake. And whenever a person who is staying in the organization for a longer period, obviously company will give them best opportunities, best rewards and apprentices, and they keep them to stay in their organization by their promotional schemes or bonuses, etc. Initiative. Okay, what does that initiative means? Initiative is simply a single step you have taken to do something, or to take a voice for something, or you to suggest something. You took some initiative in an organization. According to FAOL, initiative should be done by each and every employee of the organization. As in, suggestions or initiations can't be a part of only top management. Maybe management should be allow new ideas from the junior staff, from the lower staff also, so that they get the big kind of revolution, big kind of changes in the organization, because top management don't know what's going in the market. The youth or the current person who is dealing with the market is only know the situation, what's going with the market.
So whenever you provide initiatives from the employees, like अगर आपने अपने जूनियर से कुछ एडवाइजेज ली कि हम इस काम को और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, प्लीज गिव अस सजेशंस हाउ वी कैन इंप्रूव आवर प्रॉफिट्स, और जरूरी नहीं आपको उनके सारे इनिशिएशंस और सजेशंस मानने हैं, इट्स सिंपली दैट यू नीड टू आस्क देम इनिशिएशंस एंड देन you need to follow, top management need to decide whether which kind of suggestion will help me in organization or which will not. This all step deals with the initiative. Workers should be encouraged to develop and carry out their plans for improvements. Initiative means taking the first step with the self motivation, it is thinking out and executing the plan. बट इट डजंट मीन कि आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी, और या फिर कोई एम्प्लॉय ये नहीं बोल सकता कि मैंने इनिशिएटिव लिया था, आपने मेरे को मौका नहीं दिया, आपने मेरा काम करना नहीं चाहा, या फिर वॉट एवर द रीजन, एम्प्लॉय डोंट गेट डिमोटिवेटेड. बट इफ वंस यू आस्क इनिशिएटिव स्किल्स विद योर एम्प्लॉयज, दे फील मोटिवेटेड. यार ये सीनियर इतना सीनियर होकर हमसे एडवाइस मांग रहा है, इतना सीनियर होकर हमसे सजेशन मांग रहा है, कुछ तो भी बात होगी. दैट्स द पर्टिकुलर थिंग फील्स यू अट्रैक्टेड एंड comes to the organization. Last but not the least, esprit de corps. Esprit de corps. My dear, it is not cop, it is not police, okay? It is a corps, C-O-R-P-S. Latin word here. It represents with the meaning that management should be coordinated with their team member to all the organizations. Management should take care of their team. Management will go with the team. They should replace I with the we. They should have followed the principle of leadership qualities. Whatever the work should be done by management, it can't be rewarded to management only. It should be rewarded to the employees also who are doing the job. Like for example, in case of an organization, अगर एक एम्प्लॉय ने कोई अच्छा काम किया है और उसका काम का क्रेडिट, सारा का सारा क्रेडिट उसके सीनियर्स लोग ले गए कि यार ये काम तो मैंने किया है, ये काम के लिए रेस्पॉन्सिबल मैं था, सारा क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए, बोनस मुझे मिलना चाहिए, तो आई एम डैम श्योर वो एम्प्लॉय आपके लिए कभी भी नेक्स्ट टाइम से काम नहीं करेगा. लेकिन अगर आपने बोला, अगर आप मैनेजर और आपको क्रेडिट मिल रहा है किसी और के काम का या खुद के काम का भी क्रेडिट मिल रहा है, और आपने बोला कि ये सारा काम जो मैंने किया है सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, मेरी टीम की मेहनत है, माई टीम डिड द बेस्ट वर्क, नाउ यू अप्रिशिएटेड, यू कमेंडिंग, यू आर giving rewards to your team also, you are appreciating to your team also, it shows the teamwork in the organization. और अगर किसी भी मैनेजर में ये क्वालिटी हुई कि वो अपने एम्प्लॉयज को भी साथ लेके जा रहा है, एम्प्लॉयज को भी साथ में कोऑर्डिनेट करता हुआ जा रहा है, हमेशा एम्प्लॉयज को ये भी रेस्पॉन्सिबल बोलता जा रहा है, इट्स लाइक इट्स द बेस्ट काइंड ऑफ लीडरशिप क्वालिटी. दैट इज whenever you achieve something, please appreciate with your team, with your supporters, with your subordinates. But whenever you are blamed for something, you have to be liable only for you only. You can't blame that my team did this work. Like you have to do, like as in case employees, you got the promotion or you got the targets achieved, आपको हमेशा ये बोलना पड़ेगा ये मेरी टीम की वजह से हुआ है, मैं अकेला कभी कुछ नहीं कर पाता. बट अगर आपको उस पर्टिकुलर टारगेट के लिए कंपनी से ये सुनने को मिल रहा है कि आपने टारगेट्स अचीव नहीं किए, तब आप ये कभी मत बोलना कि ये जो भी हुआ मेरी टीम की वजह से हुआ है. तब आप ये बोलना कि जो भी हुआ है सिर्फ मेरी वजह से हुआ है, आई वॉज द ओनली रेस्पॉन्सिबल. Believe me guys, this is the best leadership quality all the organization wants in their organization. That is, who is the person who blames for and take a blame for himself, चाहे किसी की भी गलती हो, and who did appreciation, चाहे एक ने काम किया हो चाहे 10 ने काम किया हो, appreciation to be given to all, each and every person. This is all about esprit de corps. Management should promote team spirit, unity and harmony among employees. Management should promote a teamwork. Here you can also write that management should use or management should replace I letter with we, that all the things done by we, not by me only. According to Fayol, management should promote teamwork, especially in large organizations. Management promotes teamwork in large organizations so that you will get a better opportunity to understand how the workers will deal, as well as your employees also get motivation that yeah, our boss is so good, he will appreciate in each and every task.
जब भी अगर किसी एम्प्लॉय का एप्रिसिएशन मिलेगा उसको और उसके मैनेजर की तरफ से मिलेगा, वो उस मैनेजर को कभी नहीं भूलेगा, एज वेल एज वो अपना बेस्ट से भी बेस्ट देने की कोशिश करेगा। और हर एम्प्लॉय चाहेगा कि यार मुझे उस मैनेजर के अंडर में काम नहीं करना जो मेरे को अप्रिशिएट ही नहीं करता या जो अपनी तारीफ ले जाता है, मेरी काम की जगह तारीफ खुद के लिए जाता है। हर कोई एम्प्लॉय चाहेगा मेरे को उसी मैनेजर के अंडर में डालो जो हमारा भी वर्क एफर्ट्स, हमारे भी एफर्ट्स को मोटिवेट करता है। अदरवाइज ऑब्जेक्टिव्स वुड बी डिफिकल्ट टू रियलाइज। और अगर हमने ऐसा टीम वर्क मेंटेन किया ऑर्गेनाइजेशन में, तो माय डियर फ्रेंड्स, इट विल आल्सो मिनिमाइज द नीड फॉर यूजिंग पेनल्टीज। आपको पेनल्टीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रीजन बीइंग, सारे एम्प्लॉयज आपसे ऑलरेडी इतने खुश रहेंगे, वो ऑलरेडी उतना काम कर देंगे कि आपको पेनल्टीज पे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट यहीं अगर आप रूड हो जाओगे कि नहीं यार ये काम सारा मैंने किया है, या फिर आप कुछ काम नहीं करते, माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आपको किसी एम्प्लॉय को सुनाना है, डांटना है, डांटो, पर्सनली डांटो। बट अगर आप ग्रुप में खड़े हो तो हमेशा अपने एम्प्लॉयज की, अपने टीम मेंबर्स की तारीफ करो, सो दैट कभी भी कहीं से भी उसके पास ये न्यूज ना जाए कि आपने अपने जूनियर के लिए या टीम मेंबर के लिए आपने कुछ बुराई करी है। अगर कहीं से भी उसको ये न्यूज आएगी तो ही और शी विल बी गेट डीमोटिवेटेड एंड मे बी प्रोवाइड डोंट गिव अप बेटर रिजल्ट्स। बट इफ यू अप्रिशिएट इन अ पब्लिक, then I'm damn sure he or she will give you a better results in each and every manner they can give. Okay, thank you.